Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English class on Example channel. I'm your trainer Vishal was, and you guys are doing super great. All right. Good evening, Gulshan Sharma ji, Nishant Kataria ji, Train Journey, Priya Kumari. Hello, how are you? Technical भैया थोड़ा ये जो chats हैं वो मुझे थोड़ी बड़ी दिखाई दें, हाँ clear दिखाई दें, right? Okay, Priya Kumari ji, I'm here. I'm also here. Hi, how are you? Good evening, dear. All right, no, it's not good afternoon, Fazeen. It's good evening. 4 o'clock के बाद good evening हो जाता है. ठीक है. चलिए. So, what is the index today? What are we going to do today? Let's have a look at the content that you are going to learn today. First, we're going to do word of the day today. Okay. Then we are going to talk about joint family and nuclear family. What is the difference? That's a reading things. And then we are going to talk about what is confidence. See, we need something to talk about since it's a spoken English class. So we must have some topic to talk about. So I thought of teaching you, guiding you, and at the same time have a nice conversation on certain areas of personality development. As in last class on Wednesday, okay, Wednesday बोलते हैं, Wednesday नहीं बोलते, Wednesday. Okay, so or D silent होता है उसमें. So on Wednesday I told you that how to participate in group discussion, what to do, what not to do, and what all the ingredients required to be a better speaker, to be a better personality. So in those points there were so many points like confidence, intellectual skills, body language. So I have picked confidence for today's class to have a healthy discussion with you, to share my opinion, to share my experiences. You might have your own experiences of life. You might have your own way of developing confidence. You can share your views and opinions and your experiences through chat. I'll be more than happy to learn from you guys as well, because every individual on this planet has a new story, has a story to tell, and that story has some moral lesson, some very good lessons to learn. So I'm going to share my opinion, my way of carrying my personality as a confident person. So I hope you will learn some good things today with English and to carry the confidence. To love marriage or arranged marriage, you did not tell us. लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे मैंने अपना व्यूज तो दे दिया है. इट्स अप टू यू नाउ. अब तो आपका डिसीजन होगा ना, विच वन यू चूज. आई टोल्ड यू अबाउट लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज. I told you the difference. Now it's up to you to judge what kind of life you want to lead. It's your decision. Whether you are someone who wants to enjoy the life without taking the responsibility or without leading it. Because in arranged marriage, what happens? You are not the leader. Your parents become the leader. You know, they take the hold of your decisions, and that's good. There's nothing wrong if your parents are taking the responsibility, if your parents are leading your life, because they are your true friends. But on the other hand, if you do love marriage, you become the leader of your life, because whatever happens after love marriage, it's all your fault, it's all your responsibility, it's all you. If good happens, then you are appreciated. If something bad happens, things doesn't work out between you guys, then also you're responsible. But in arranged marriage, what happens? Your parents are held responsible for any wrong thing, for any good thing. So that's the two conclusion, I would say, of love marriage and arranged marriage. So it's up to the person what kind of personality he has, whether he wants to lead the life with giving the responsibility to his parents, and there's nothing wrong in that, or whether you want to lead your life in your own way, sometime maybe disagreeing your parents. So it's up to you, buddy. Take your call, take your decision. The ball is in your court. एक बहुत अच्छा phrase है English में ना, the ball is in your court. Decision तो आप ही को लेना पड़ेगा, dear. ठीक है, चलिए. All right. So this is what we're going to talk about.
कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे आज, ठीक है। एंड देन हमारा कोटेशन रहेगा कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आज का। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रन द क्लास टुडे। जस्ट अ सेकेंड, let us reach to the first page. Okay, so let's talk about word of the day. Word of the day. Oh, I need pen. And I actually need pen. I need the board as well. If not the board, at least to do the editing here. I think the board is hanged. Yes, technical भैया थोड़ा देखना इसको please. सही करेंगे इसको. Not coming? All right, it's taking a bit of a time. We're having some hanging problem here. So machine is a machine. That's why it says a machine is a machine. Okay, so machines sometimes make you, helpless. You can't do anything sometime. Okay, shall I open this? So my technical bhaiya is working on it. So you guys please keep calm. Meanwhile, you can tell me your way of confidence. What do you think about confidence? Think about it. You have the time now, so you can think over it. That what is confidence in your opinion? How you think one can be confident? Okay, we can keep it. Yeah, whatever. Behind the scenes, what we do before the class, we're doing the same thing right in front of you, in front of the camera, so you can see how things happens here. हाँ, तो आप देख सकते हैं हम कैसे तैयार करते हैं चीज़ों को, सब कुछ आपके सामने चल रहा है। क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है, तो आज आपके सामने सबको देखिए, हम पीपीटी खोल रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं, बोर्ड सेट कर रहे हैं। ये सब हम क्लास शुरू करने से पहले करते हैं यूजली आज, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है। ठीक है, तो आ गए जी हम वर्ड ऑफ द डे पे। आई होप कि अब ये काम करेगा अच्छे से।
राइट, अब ये अच्छे से काम कर रहा है, थैंक गॉड। ओके, सो आवर वर्ड ऑफ द डे टुडे इज कॉन्फिडेंट। अब एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में आप देखिए ANT आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बोल भी कॉन्फिडेंट रहा हूं, कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंट में E आता है। अब जो कॉन्फिडेंट वर्ड है वो एक नाउन है, उसका मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी सारी सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं उससे। ये वो व्यक्ति होता है जिसको आप बता सकते हो कि यू हैव मोर देन वन गर्लफ्रेंड्स। ऑलराइट, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट हैव मोर देन वन गर्लफ्रेंड्स बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैट। ऑलराइट, एनीवेज, कॉन्फिडेंट ENT वाला जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। देखिए, कॉन्फिडेंट का मतलब है एक ऐसा आदमी जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास पात्र, जबकि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, अपने अंदर, उसके अंदर बहुत, उसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंट है ना। कॉन्फिडेंट जो विश्वास वाला होता है, अपने ऊपर जो विश्वास होता है, उसका नाउन होता है कॉन्फिडेंस। ध्यान से देखिए, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो गया, आत्मविश्वासी, है ना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इन्फेस्टेड इन हिज पर्सनालिटी, है ना। और कॉन्फिडेंट जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विश्वास पात्र होता है, जिसके साथ आप अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। यस, ट्रस्टवर्दी वी कैन से, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। गुलशन शर्मा जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो यहां पर देखिए, अब जल्दी से देख लो, कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट हो गया भाई एक नाउन जिसका मीनिंग, जिसका प्लूरल भी होता है कॉन्फिडेंट्स या कॉन्फिडेंट्स भी होता है, TES भी लग जाता है। अ पर्सन हु यू ट्रस्ट एंड विद हुम यू टॉक अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, एक दोस्त तो ऐसा जरूर होगा जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर देते होगे, अपने सारे सीक्रेट्स, ठीक है, प्राइवेट भी। तो भरोसेमंद या विश्वस्त व्यक्ति जिससे निजी या गुप्त बातें की जा सकती हैं, है ना। अतरंग मित्र, विश्वास पात्र, जिस पर आप पूरा विश्वास करते हैं, पूरा ट्रस्ट करते हैं। एग्जांपल देखिए, अ क्लोज या ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो यू मस्ट बी हैविंग अ कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट में बस एक E अगर आप लगा दें A की जगह, तो पूरे तरीके से मीनिंग चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाता है आत्मविश्वासी व्यक्ति, और कॉन्फिडेंस ENCE कर दें तो नाउन बन जाता है, जिसका मतलब आत्मविश्वास होता है। तो ये तो हो गई वर्ड की बात। लेट्स मूव ऑन टू जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक टुडे इज जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। सिंस आवर टॉपिक इज कल्चर, तो कल्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं। आपने देखा, पहले हमने कल्चर में प्लेसेस, रिलीजन्स की बात करी, फिर कल्चर में हमने फूड की भी बात करी, कपड़ों की भी बात करी, और फिर हमने अरेंज मैरिज, लव मैरिज की बात करी। एंड टुडे आई हैव द लास्ट सेशन ऑन कल्चर विच इज जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। सो आई एम गोइंग टू रीड अ पैराग्राफ in which I'm going to tell you what is joint family and nuclear family, and let us learn some words, increase our knowledge, because knowledge is power, right? Knowledge is also one of the most important components to help you become more confident, okay? It adds value in your personality. All right, so let's read joint family. आप पिक्चर देख सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब होते हैं, है ना। पूरा जिला होता है, ये घर नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट होता है पूरा। ओके, सो फॉर जनरेशंस इंडिया हैज अ प्रिवेलिंग ट्रेडिशन। देखिए, प्रिवेलिंग वर्ड सीखिए। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो चलता है, जो ज्यादातर होता है हमारे यहाँ, जो प्रसिद्ध है, जो चारों तरफ चलता है। तो जनरेशंस का मतलब हो गया एक के बाद एक जनरेशंस जो आ रही है। जैसे हमारी जनरेशन है, हमसे पहले हमारे माँ बाप की जनरेशन थी, उनसे पहले उनके माँ बाप की जनरेशन थी, ठीक है। तो जनरेशन से इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन है जिसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली का सिस्टम है हमारे यहाँ। इट इज व्हेन एक्सटेंडेड मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस स्पाउसेस, स्पाउसेस का मतलब वाइफ हो गया, एंड देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे होता है। और ऑफस्प्रिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं आपको।
ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, ये जो वर्ड है ऑफस्प्रिंग, इसका ध्यान रखना बच्चों, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही होता है। अगर किसी के एक बच्चा है तो भी ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, और एक से ज्यादा है तो भी ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही हैज 2 ऑफस्प्रिंग्स, तो एस नहीं लगाना होता इस वर्ड में, इस वर्ड की ये स्पेशल बात है, ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही होता है, ठीक है। ABD 360 फिरोजाबाद, हमको ना आवे इंग्लिश कोई सिखाएगा। बेटे थोड़ा सा एटीट्यूड एडजस्टमेंट कर, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर, क्योंकि जिस टोन में आपने लिखा है हमको ना आवे इंग्लिश, तो ऐसे तो जिंदगी भर ना आवे तुमको इंग्लिश। You have to change your attitude and you have to become optimistic. Guys, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था ऑप्टिमिस्टिक, ध्यान करिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, है ना, जो नेगेटिव थॉट रखता है, नेगेटिव बातें करता है। सो यू गॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। इसकी जगह तुम अगर ये लिखते कि हमको नहीं आती इंग्लिश लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सर सीखने की, हमें बताओ कैसे सीखनी है, तो मैं ज्यादा खुश होता, ठीक है। सो प्लीज स्टॉप दीज बुलशिट्स ऑन द चैट। आई डोंट वांट टू सी एनी बुलशिट हियर। Just come to the, point. Come to the point. ठीक है, पॉइंट की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं। ऑल राइट, सो ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही होता है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। सो ही हैज 2 ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, जो बहन भाई होते हैं, जैसे है ना, घर में 2 भाई हैं, 2 बहन है, 1 बहन है, 2 भाई है, तो जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए सिबलिंग्स वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। तो आप बोल सकते हैं वी आर 3 siblings, we are 2 siblings। तो सिबलिंग्स में तो एस लगता है डियर, तो उसमें जेंडर बाइज नहीं होता। सिबलिंग जो वर्ड है वो जेंडर बाइज नहीं है, बहन भाई दोनों को मिलाकर बोला जाता है। जैसे हम लोग 4 हैं, है ना, 3 ब्रदर्स है, 1 सिस्टर है, या 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स है, तो हम बोलेंगे वी आर 4 siblings, ठीक है। तो सिबलिंग्स वर्ड का यूज जेंडर बाइज नहीं होता। हालांकि ऑफस्प्रिंग भी जेंडर बाइज नहीं है, लेकिन ऑफस्प्रिंग का प्लूरल ऑफस्प्रिंग ही होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो भाई जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें एक्सटेंडेड फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं। एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड करना ना, बड़ी हुई फैमिली होती है ये, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। तो स्पाउसेस होती हैं, वाइफ होती हैं, बच्चों की वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं। यूजली द ओल्डेस्ट मेल मेंबर इज द हेड ऑफ द जॉइंट इंडियन फैमिली सिस्टम। आपको पता है हमारे यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको हेड माना जाता है। ही मोस्टली मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, और वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एंड रूल्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर लाइकली टू अबाइड बाय देम। अबाइड बाय एक बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में। फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इफ यू वांट टू कन्वे द meanings of some longer sentences in 1 words or 2 words, so you need phrasal verbs। देखिए phrasal verbs मैं बार बार क्लासेस में बताता रहता हूं। phrasal verbs क्या होती हैं बच्चों? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होती हैं जी। फ्रेजल वर्ब होती हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। एक वर्ब और प्रीपोजिशन का एक टीम वर्क यहां पर होता है और वो एक पर्टिकुलर मीनिंग कैरी करता है। जैसे यहां पर अबाइड बाय, आप एक फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, कहना मानना या फॉलो करना। जैसे यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ, है ना, कि भाई आपको कानून फॉलो करना चाहिए, कानून मानना चाहिए। तो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या लॉ को मानने की, फॉलो करने की जब बात आती है तो हम बोलते हैं यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ। You must have noticed that gradually I'm increasing the level of vocabulary, the level of sentences। ठीक है, टुडे वी आर डूइंग 37th क्लास, आज आपका 37वां क्लास है, और आप नोट कर रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे अब कंटेंट का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, एज आई प्रोमिस्ड यू दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर्स लेवल एंड देन आई विल टेक यू ग्रेजुअली टू इंटरमीडिएट लेवल्स। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और मैं वैसा ही कर रहा हूं, आप नोट कर रहे होंगे। धीरे धीरे मैं हिंदी भी कम करता जा रहा हूं, इंग्लिश बढ़ाता जा रहा हूं और वोकैबुलरी भी आपकी एडवांस करता जा रहा हूं। कुछ बेसिक वर्ड्स हम बहुत 36 सेशंस हो चुके हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टाइम हैज कम टू इंक्रीज द लेवल and
take you to the next level of learning. So that's why I'm bringing in some phrases. That's why I've started reading a paragraph, and that's a good way, I guess, to have something to talk about, and which also you'll find interesting as well as valuable. It is adding values in your life. It is making your personality, right? That's what I think. Okay, let's move on to next thing. So this is what joint family is, and I want you guys to pay attention to abide by, ठीक है, and offspring बच्चों को बोलते हैं, siblings भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, spouses wife को बोलते हैं, या partner को, wife husband किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है. So you have some good words here, and you understand how to talk about joint family. What is joint family? ठीक है. Let's move on. Now, न्यूक्लियर फैमिली. So, न्यूक्लियर फैमिली, अब न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है ये हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, दैट्स इट. एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती. जॉइंट फैमिलीज आर एक्सटेंडेड फैमिली, है ना. वहां पर क्या होता है, दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे, है ना, चाचा चाची. आप समझ ही रहे हैं. You guys live in India, so you understand joint family and nuclear family, and you must have noticed the trend has changed now. Even in India, people are separating from their parents, maybe due to certain circumstances, because people are living out there in outskirts, है ना. आउटस्कर्ट्स, बच्चों, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जो थोड़े सिटी से बाहर के एरियाज होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड होते हैं. सो दे हैव टू माइग्रेट टू सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू सेपरेट, दे हैव टू पार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पार्ट फ्रॉम, ठीक है. वन ऑफ ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फ्रेजल वर्ब आ गई है, तो मैं बताए बिना नहीं रह पाऊंगा. हाँ, पार्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. ध्यान रखिएगा, पार्ट फ्रॉम का यूज लिविंग बीइंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, जब जिंदा लोगों से आप अलग होते हैं. लेकिन पार्ट विद का यूज होता है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. तो ध्यान रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको बोलना होता है पार्ट विद. जैसे आई कैन नॉट पार्ट विद माई कार. हाँ, मैं अपनी कार से अलग नहीं हो सकता. सो जैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, आपको क्या बोलना है, पार्ट विद. लेकिन अगर लिविंग थिंग्स आ जाए तो आप बोलेंगे पार्ट फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज पार्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई है, बट शी कैन नॉट पार्ट विद मनी. लेकिन वो पैसे से अलग नहीं हो पाई, ठीक है. तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पार्ट विद बोलना है, लिविंग थिंग्स के लिए पार्ट फ्रॉम बोलना है. इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स डिफरेंस. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन. All right, so let's read about the nuclear family. A nuclear family is a family group consisting का मतलब उसके अंदर है, होना, है ना. consisting of two parents, दो parents हो गए, husband wife हैं यहाँ पर, and their children, one or more, उनके एक बच्चे या उनके दो बच्चे. ये होती है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को एलिमेंट्री फैमिली भी बोलते हैं. ओके, न्यूक्लियर फैमिली को कंजूगल फैमिली भी बोलते हैं. मैंने कंजूगल वर्ड पढ़ाया था आपको, आई थिंक बिफोर 3 days, ठीक है. कंजूगल मतलब रिलेटेड टू मैरिज. सो कंजूगल फैमिली भी बोलते हैं जी न्यूक्लियर फैमिली को, बिकॉज कंजूगल का मतलब होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, समथिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ ओनली. सो कंजूगल फैमिली भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों को ही जो है न्यूक्लियर फैमिली बोलता है. तो रिमेंबर द वर्ड कंजूगल. अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो कंजूगल वर्ड आपको याद होना चाहिए. रिमेंबर आई टोल्ड यू कंजूगल विजिट. जो वाइफ अपने हस्बैंड से जेल में मिलने जाती है तो उस विजिट को कंजूगल विजिट बोलते हैं. इसीलिए मैं प्रीवियस क्लासेस जो है वीक में एक दिन प्रीवियस क्लासेस रिवीजन के लिए चलवाता हूं. ऑलराइट, सो वी ऑलवेज प्ले द प्रीवियस क्लासेस once a week so that you can revise, and usually we play the revision class on Friday, but because of the Mahashivratri yesterday there was holiday, so I played the revision video yesterday and I'm here in front of you teaching you today. And there will be no classes on Saturdays and Sunday. We only take classes from Monday to Friday. Okay, but this week you may have class tomorrow.
I may be taking the session tomorrow as well, because I'll be on leave on Monday. So please be ready to take the class tomorrow as well. I'll see you tomorrow 4 to 5, because I'm taking off on Sunday and Monday this time. All right. So we are here. It is in contrast to a single parents family, the larger extended family. कंट्रास्ट का मतलब होता है बेटे अपोजिट होना. तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अपोजिट होती है सिंगल पेरेंट फैमिली. देखो सिंगल पेरेंट का मतलब है जब डाइवोर्स्ड हो जाता है और सिंगल मदर जो है बच्चों को पाल रही होती है, या सिंगल फादर बच्चों को पाल रहे होते हैं. तो ये वैसी फैमिली नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं इसमें. एंड एक्सटेंडेड भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. और अ फैमिली विद मोर देन 2 पेरेंट्स. न्यूक्लियर फैमिली टिपिकली सेंटर ऑन अ मैरिड कपल विच मे हैव एनी नंबर. ठीक है, तो मैरिड कपल होते हैं तो उसको ही हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड, इट इज कॉल्ड कंजुगल फैमिली और एलिमेंट्री फैमिली. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन to our hot topic of discussion today in your, adding values in your personality development. So the topic is confidence. So let us understand the bookish definitions, what is written in Wikipedia or what is written in most of the books about confidence. Let us have look at the definition of confidence, and then I'll share my personal experiences and my personal opinion on confidence, what I think about confidence. Then you guys can also give me some ideas of your experiences about confidence, how you carry your confidence, how you build up your confidence. Let's read about confidence first. So confidence is a state of being clear-headed, either that a hypothesis or prediction is correct or that a chosen course of action is the best or most effective. कहता है कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्लियर हेडेड होना. मतलब यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए. किसी भी चीज पर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो डाउट नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं उस चीज के बारे में कि बॉस ऐसा ही है. दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज. ऐसा ये कह रहा है. कह रहा है जो भी हाइपोथेसिस है या प्रेडिक्शन है. हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शन का मतलब है जो आप सोच रहे हैं, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा और उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको डाउट नहीं है कि ऐसा ही होगा. उस चीज को ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस होती है ना. प्रेडिक्शन का मतलब होता है पहले से ही प्रेडिक्ट करना, अनुमान. आपका अनुमान, जब आपको अपने अनुमान के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो उसे बोलते हैं प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन मतलब अनुमान. और जो आपने रास्ता चूज किया है वो बेस्ट है, ऐसा आप मानते हैं, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फिडर. ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जहां पर कॉन्फिडेंस फिडर को बोलते थे. आप इंग्लिश में एक चीज सीखिए, रूट वर्ड्स. एक तरीका होता है इंग्लिश में वोकैबुलरी सीखने का, रूट वर्ड्स. ठीक है, तो रूट वर्ड्स जो है वो लैटिन से ही आए हैं ज्यादातर. इंग्लिश में जितने भी वर्ड आपको फिड मिलेंगे ना, जितने भी इंग्लिश के वर्ड में फिड आएगा, फिड का मतलब ही ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है. ध्यान रखिए. तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड आपको स्पेलिंग में फिड वाले मिलेंगे तो ये रूट वर्ड है. जितने भी वर्ड फिड वाले आप पढ़ोगे इंग्लिश में, उनका कहीं ना कहीं मीनिंग ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, भरोसे से रिलेटेड होगा. ठीक है, चलिए. तो ये फिडर लैटिन में होता है, विच मीन्स टू ट्रस्ट. ठीक है. Therefore, having self confidence is having trust in oneself. तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास होना कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जो अनुमान में लगा रहा हूं, या जो रास्ता मैं चूज कर रहा हूं वो रास्ता सही है, आपको उस पर कोई डाउट नहीं है. ये कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा ये कह रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन. फाइन, इट ऑल्सो टीचेस अस सम पॉइंट्स. And here is one thing that I would like to add in your vocabulary. See, instead of repeating that I can't do it, please change your vocabulary. Because whatever you put in your mind through speaking and listening, okay, and repeating inside, it becomes your habitual action. ठीक है, जितनी बार आप ये बोलते हैं कि I can't do it, आपका माइंड उसको एब्जॉर्व करता रहता है और वो उसको फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देता है. ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज चेंज योर वोकैबुलरी. दिस इज माय ओपिनियन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू इट, बेटर से आई विल ट्राई और आई कैन डू इट. चेंज द वोकैबुलरी. नेगेटिव चीज बोलना सुनना छोड़ दीजिए.
ठीक है, this is first opinion that I would like to add. All right, let's move on. Now this is my opinion, this is all my thinking and my experiences, this is based on my experience. What I think about confidence is, in my opinion, देखिए अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना चाहिए इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू मी एक गलत फ्रेज माना गया है, ठीक है. सो प्लीज नेवर से अकॉर्डिंग टू मी, ऑलवेज यूज इन माई ओपिनियन. अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम सही होता है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू मी जो है वो एक बहुत ही कैजुअल स्लैंग माना गया है, वो अच्छा वर्ड नहीं माना गया, अच्छा फ्रेज नहीं माना गया. सो प्लीज स्टार्ट सेइंग इन माई ओपिनियन. सो इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या है? मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस का मतलब है डायरेक्शन प्लस प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस. I'll tell you what, I'll share my story to you. When I started, my professional life, I thought that, I knew lots of things and I will work hard and I will do it. I'll get the success. So I hesitated in taking the help of experienced people. I hesitated in taking the help of my elders, thinking that I knew lots of things, so I could handle it. So I worked hard, I worked a lot, and the result also was there. I got good results in my life, but the speed was very slow, because what was happening, I was committing mistakes, I was making mistakes and then learning from mistakes, correcting them, and then putting my hard work again. So what happened, because I did not take help, I did not take directions from my elders or from experienced people of that field, I had to face failures in my life. Failures after failures after failures, and then I get success. So what I think is that if you add direction with preparation, you gain confidence, and once you have confidence, believe me, you can do wonders in your life. Okay, so first thing in your personality that you need to add is confidence. All right, so you can see the image here. The guy is working out. एक्सरसाइज करने को वर्कआउट भी बोलते हैं गाइस, ठीक है. तो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज कर रहा है, एंड देयर इज अ कोच. यहां पर आप देख रहे हैं ये पर्सन कोच है, ठीक है. ही इज अ कोच, ये कोच है. ओके, ये मूड में नहीं है चलने के. ऑलराइट, सो यू कैन सी द कोच हियर एंड द गाय इज वर्किंग आउट, ठीक है. तो पहले डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन लेकर एक्सरसाइज चार्ट बना लिया, फिर वो उसको फॉलो कर रहे हैं. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो आपकी हालत कुछ ऐसी होती है ना. शेप भी नहीं है, पेट निकला हुआ है, हाथ पैर मसल्स नहीं है, पसीना निकल रहा है, मेहनत कर रहे हैं. बट अब मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है, बिकॉज पहला स्टेप हमने क्या ले लिया, हमने डायरेक्शंस ले लिया. इसलिए गुरु इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है ना. I'm not saying that you cannot do things only with hard work. You can do that, but if you take the help of experienced people in whatever the chosen field you are into, the help of experienced people, the stories of failures of the experienced people will help you not to repeat the same mistakes. ठीक है. जैसे इस पर मुझे एक बात याद आती है. मैं एक रोड पर ड्राइव कर रहा था, वहां पर एक गड्ढा था, लाइट नहीं थी वहां पर, और मेरा स्कूटर उस गड्ढे में गिर गया. मैं आया, मैंने आपको बताया कि यार उस वाली रोड पर स्ट्रीट लाइट खराब हो रही है और वहां साइड में ये गड्ढा हो रहा है, तो अगर तुम जाओ तो ध्यान से जाना. और तुमने मेरी डायरेक्शंस को, तुमने मेरे एक्सपीरियंस को, यू हैव टेकन माई एक्सपीरियंस फॉर ग्रांटेड. याद करो इस फ्रेज को. इफ यू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को हल्के में लेना. अच्छा होगा गड्ढा, ठीक है. अब आप उसी रोड पर जा रहे हो, सेम रोड पर जा रहे हो, अंधेरा है, लाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मेरा एक्सपीरियंस सीरियसली नहीं लिया, आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और उसी रोड पर आप भी गड्ढे में गिर गए. तो भैया दो चीजें हैं. एक लाइन मैंने सुनी थी, एक्सपीरियंस जो होता है इज अ वेरी एक्सपेंसिव टीचर. एक्सपीरियंस इज अ वेरी एक्सपेंसिव टीचर. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अक्सर हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं.
जब तक हम किसी सिचुएशन को खुद फेस नहीं कर लेते ना, तब तक हम सीखना ही नहीं चाहते। अगर यहीं पर वो व्यक्ति मेरी बात सुन लेता कि उस रोड पर गड्ढा है और सुनकर अगर सीख लेता तो वो उस गड्ढे में गिरने से बच सकता था, लेकिन नहीं, वो गड्ढे में गिरा, उसने खुद एक्सपीरियंस किया और फिर उसने सीखा। सो इन लाइफ वी ऑलवेज डू दैट। There are elders, there are experienced people around us. They always want to share their stories. They always want to tell us, that in doing certain things, in following certain course of actions, what they came across, है ना, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब मैं यहां पर पढ़ाना चाहूंगा। आज मेरा थोड़ा सा मन फ्रेजल वर्ब पढ़ाने का भी कर रहा है। सो प्लीज गाइज लर्न दिस फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। बाय चांस किसी से मिलना। अब वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आई कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स एवरी डे। हाँ, कि मेरी रोज मुलाकात होती है जी, रोज मेरे सामने नए वर्ड्स आते हैं। सो आई कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स एवरी डे। सो वॉट एवर प्रॉब्लम्स योर एल्डर्स और एक्सपीरियंस्ड पीपल अराउंड यू केम अक्रॉस, they want to share with you so that you can learn from their mistakes. But the problem of human being is that they want to learn through their experiences only. And experience is a very, very expensive teacher, let me tell you guys. ठीक है, अनुभव बहुत ही महंगा टीचर होता है। अक्सर लोग अनुभव के बाद ही सीखते हैं। But one suggestion that I would like to give you is learn from others' mistakes. Why committing or making the same mistakes? ठीक है, so that's the point. So come across का मतलब होता है अचानक से मिलना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं I came across my old friend yesterday. I came across my old friend yesterday. कल मैं अचानक से अपने एक पुराने दोस्त से मिला। तो किसी भी चीज का सामने आना, ठीक है। कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स, कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, कम अक्रॉस अ फ्रेंड, तो आप कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। इन स्पोकन इंग्लिश you will hear most of the time people using phrasal verbs. That's why I'm emphasizing phrasal verbs, because I want you guys to get master on phrasal verbs and start using them in your language. ठीक है, आप भी उसका यूज करना शुरू करिए। तो चलिए, तो आपने देखा कि डायरेक्शन के बाद प्रिपरेशन करने से रिजल्ट आया, जल्दी आया। बिना डायरेक्शन के भी रिजल्ट आते हैं, बट अगेन एज आई सेड, you will make lots of mistakes. Okay, you will have to come across many failures. Then you will get up again and then do and then learn. That's a process. Fine. Because sometimes even after getting the directions also you will get failures. But the number of failures could be less, or the time could be, a little fast. Fast, थोड़ा rapid हो जाता है। ठीक है, तो जहां आप 10 failures face करेंगे, वहां directions के साथ हो सकता है आप 2-3 failures करें। So one more thing that I would like to add here is that adding or not adding, actually spending money on learning, ध्यान से सुनना, spending money on learning is not an expense, it's an investment. जब आप किसी चीज को सीखने के लिए पैसा खर्च करते हैं ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो खर्चा नहीं होता। इसलिए सीखने के लिए पैसा खर्च करते समय कभी कंजूसी मत करना। ठीक है, जैसे in order to learn English, if you have to buy a book, a good book, or if you have to recharge your mobile maybe a little more than what you are or what you were doing, so please never hesitate, because learning takes investments, and that's investments could be financial, है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, है ना, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और सैक्रिफाइसेस, यू हैव टू समटाइम्स सैक्रिफाइस, यू हैव टू सिट फॉर 1 hour टू लर्न समथिंग, राइट? सो डू दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन। सी व्हाट हैपेंड विदाउट प्रिपरेशन एंड डायरेक्शन।
आप बिना प्रिपरेशन के और बिना डायरेक्शन के कुछ करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो भाई साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन्होंने अपनी कमर पूरा बैंड किया हुआ है और ये एक गलत पोस्चर है जिससे आपको हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली नथिंग, इट्स लैक ऑफ प्रिपरेशन। आपका कॉन्फिडेंस कम जब ही होता है जब आप प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। तो ये भाई साहब यहां पर आपको देख रहे हैं, मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बिना प्रिपरेशन और बिना डायरेक्शन के एक्सरसाइज करने चले गए हैं जिम में, और इन्होंने क्या किया है, ये वेट उठा, बट ही डज नॉट हैव द राइट पोस्चर्स, द बैक शुड बी स्ट्रेट, अदरवाइज यू मे गेट हर्ट, है ना, आप हर्ट हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाट हैपन विदाउट प्रिपरेशन एंड डायरेक्शन। आप कोई काम करने जाते हैं अगर बिना डायरेक्शन और प्रिपरेशन के, तो आप वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं। ऑब्वियसली दैट्स व्हाट हैपन व्हेन पीपल फेस इंटरव्यूज, बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर इंटरव्यूज। बिफोर द इंटरव्यूज यू मस्ट प्रैक्टिस to answer certain types of questions that you may come across there, and you must be having a confident, कोई एक कॉन्फिडेंट तो आपका होता होगा ना ऐसा, जिसके साथ यू कैन शेयर और ही कैन कम एंड हेल्प यू एंड आस्क यू सम क्वेश्चंस। सो बी इन अ प्रैक्टिस। इट डज नॉट मैटर वेदर यू कम अक्रॉस द सेम क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे सेम क्वेश्चन पूछे, नो, बट यू आर प्रिपेयर बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड, you have prepared yourself to answer different questions. If you are facing an interview and you prepare yourself back home answering different types of questions, several questions, maybe 15 and 20 and more than that, then if interviewer may ask different questions, interviewer आपसे अलग क्वेश्चन पूछेगा, but उसका भी आप आंसर दे पाओगे because you have practiced and prepared and you have taken the directions from the right person. तो आप देखिए आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। सेम थिंग, टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी फील्ड इन योर लाइफ, जहां पर भी आपने मेहनत करी और डायरेक्शन लिया, वहां काम सही हुआ होगा, वहां आपका कॉन्फिडेंस भी सही रहा होगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट हैपन। ओके, इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू कम अक्रॉस फेलियर्स, तो यू हैव टू चॉइस, या तो गिव अप कर दीजिए या कीप गोइंग। तो अगर डायरेक्शन भी नहीं है ना, तो हार्ड वर्क के दम पर भी अगर आप, इफ यू कीप गोइंग, कीप डूइंग द हार्ड वर्क, एक ना एक दिन तो कामयाब हो जाएंगे। बट डायरेक्शन के साथ वो टाइम कम हो जाता है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, मेहनत कम लगती है, फेलियर्स कम आते हैं, और गिव अप कर दिया तो फिर तो सब खत्म है ना। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। इफेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड डायरेक्शंस। जैसे ही इस व्यक्ति को किसी ने डायरेक्शन दिया सही, तो फिर इसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, सो यू कैन सी द चेंज इन द पोस्चर। दिस इज व्हाट हैपन इन आवर लाइफ। दिस फिगर शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज आई हैवंट टेकन द डायरेक्शंस, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। प्रोबेबली आई एम डूइंग द रॉन्ग एक्सरसाइज एट द फर्स्ट डे। पहले दिन जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं वो हो सकता है वो एक्सरसाइज ही गलत है। The trainer may ask you to do certain different sets of exercises, then your muscles have some strength, then you can perform this particular exercise. है ना, हो सकता है ना वो आपसे एक्सरसाइज ही कोई दूसरी कराए, और उसके बाद जब आपकी पूरी बॉडी के मसल्स थोड़े थोड़े से स्ट्रेंथन हो जाएं, उसके बाद आपसे वो ये वाला एक्सरसाइज कराए। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रिपरेशंस और डायरेक्शंस, आप सीधा ये करते हैं एंड यू मीट द फेलियर्स, यू कम अक्रॉस फेलियर्स। So that's the effect of directions and preparations. Okay? और जाते जाते एक बात श्रीमद् भगवद गीता से मैं बताना चाहूंगा। I'm very inspired, by the spiritual scriptures जो मैं पढ़ता हूँ, रामायण, गीता, शिव पुराण, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, कर्मणे वेधाकास्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फले हेतु भुर्मेते संदोस्तव कर्मणि। I'm sorry, I'm not that good at Sanskrit. I'm trying. I'm learning Sanskrit. Okay, तो इसका हिंदी वर्जन आपको बता देता हूं। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म फल का कारण भी तुम नहीं हो, कर्म करते रहो, अकर्मण्यता में आसक्ति ना हो। इसका अर्थ मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कई बार प्रिपरेशन और डायरेक्शंस के बाद भी, बहुत कंसिडरेशंस के बाद भी, जो डिसीजन आपने लिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ,
वो भी गलत हो सकता है। तो यहां पर काम आती है स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि अक्सर जब लोग बहुत मेहनत करने के बाद फेल होते हैं ना, तो दे ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं इमोशनली। उन्हें लगता है कि मैंने मेहनत की और मेरा हुआ नहीं। दैट्स व्हाई you must have heard lots of suicidal cases. Students who are scoring 96%, 98% marks, they commit suicide. Do you want to know the reason? The reason is they are away from spiritual life. They are not able to handle the stress because they don't understand that you only have the control on your actions. आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, है ना, उसके रिजल्ट पर आपका कंट्रोल नहीं है। इट इज सेड बाय गॉड हिमसेल्फ, भगवान ने खुद बोला है। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? इस पर विश्वास करो। तो कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी फेलियर्स हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वहां पर और भी कुछ कमी रह गई हो, और इंप्रूवमेंट करो एंड देन बाउंस बैक। सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन डूइंग द राइट कर्मा। सिर्फ सही कर्म करते रहो, डायरेक्शंस लेते रहो एक्सपीरियंस लोगों से, और अपने माइंड का सही यूज कर कर सही डिसीजन लेने की कोशिश करो, मेहनत करो। ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, बट स्टिल यू मे still you may come across some failures in your life. So don't be afraid of that because the results are not in your hand. So spirituality क्या देती है हमें? पीस ऑफ माइंड देती है कि बॉस, मेहनत करने के बाद भी असफलता आ सकती है, फेलियर्स आ सकते हैं, बट यू नीड टू बाउंस बैक, दोबारा करो। ठीक है? सो विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। यू एंड आई are having some great topics to talk about here. ठीक है? I'm trying to open up my heart more and more. The more classes I'm taking, the more open I'm becoming in front of you. And I love this kind of talks that are happening. आपके सामने होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, but still it's fine. We're doing it online. In front of the camera. At least you guys are participating through chat, and you have become patron as well. ठीक है? Patron students, very nice. I like the spirit that people are using the words and phrases that we are learning here together. Patron students भी आ जाएंगे। श्वेता जी, आप भी एक patron ही हैं। जो नए स्टूडेंट उन्हें बता दूं, patron का मतलब होता है जो लोग रेगुलर कस्टमर होते हैं या रेगुलर किसी चीज को अटेंड करते हैं। ठीक है? So with that note, thank you very much. I'll take your leave. Please try to apply some of the things that we have discussed here, and I would like to hear from you. If you want to share your own opinion and stories, you can do that in chatting. Thank you very much. Yeah.